हेलो। हाँ राहुल। जी सर। हाँ बस 2 मिनट में चालू करवा रहे हैं सर, बस 2 मिनट। चलो वी आर लाइव नाउ, है ना? जी जी हाँ, लॉग आउट हो गया एक बार सिस्टम में से। लगाना या वैसे ही करना है? इससे अच्छी आ रही बात है। तो ठीक है, ज़्यादा बेटर होता है। ठीक। हेलो। हेलो। वेरी गुड इवनिंग सो ऑल डेलीगेट्स, माई सेल्फ राहुल वैष्णव। थोड़ी देर आवाज मत करना, मेरी बात हो रही है, मीटिंग हो रही है। गेट बंद कर दो, थोड़ी देर आवाज मत करना, बातें कम करना। जी, वेरी गुड इवनिंग to all delegates, doctor. My name is Rahul Vaishnav, associated with Kedla Pharmaceutical as the area business manager. So today, welcome to a webinar, therapist webinar. I welcome you all. A very good evening to all elements, doctor. Thank you so much for your joining for today's webinar. For our endeavor is to spread awareness about rabies, which is the fatal can be avoided once opportunity vaccinated. This is an intimated from Kedila through the innovation of serve of society and humankind. The topic of the webinar is dosage reduction strategy is rabies management role of novel vaccine. Dear doctors, rabies is the world's first 3-dose anti-rabies vaccine with a great pride.
we would like to inform you that rabies has successfully completed 1 year launch with more than 40,000 animal-wide victims being vaccinated. 100% compliance was recorded, and no case of ARDs was registered. So, dear doctors, with this is my honor to introduce you to the speaker of today webinar, Dr. Mr. R.P. Sharma Sarji, associate with MS General Surgeon Sir, sir 71-year-old sir, total 32 year government service का सर का experience है. Also sir MD हैं self TT hospital at कोटा. तो सर मैं इसके आगे सेशन सर को हैंड ओवर करना चाहूंगा. जो भी क्वेरी या क्वेश्चन होंगे सर वो प्रेजेंटेशन के एंड में अपन लेंगे सर. तो सर हैंड ओवर टू सर आरपी शर्मा सर. सर यहीं से स्लाइड नीचे आ जाएगा, चेंज हो जाएगा. जैसे ये स्लाइड हो जाएगा ना सर तो फिर ये इसी से नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगा. ओवर टू यू सर. हेलो, हेलो सर आप ही वो कंटेंट ऑलरेडी सुन रहे हैं सर. आपको यस सर, गुड इवनिंग, वेलकम सर. गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग. लाइव चल रहा है सर, आपका लाइव चल रहा है. यूट्यूब पे लाइव है सर, सारा ऑल इंडिया लेवल पे. Here I am presenting the webinar regarding rabies, which is a fatal disease, 100% fatal disease, where we are trying to save the lives by the rabies vaccine newly introduced by Cadila, and there are 3 doses, 0, 3 and 7. There are 5 doses and booster doses also for 3 months. Before that, there was a time when we are giving the injections intra-abdominally in the abdominal wall. If you go to the 45 years or 50 years back, we were using at that time the spinal injections of rabies. Intraspinal we were giving that time. But according to my experience of last 50 years, I have seen near about more than thousands of cases of rabies, where the mortality is 100% till now. Here I am presenting, and if you have got any query, you ask me and I will reply that according to my experience. Most welcome. हाँ, इसको आगे करता रहेगा ना तो बताइए. I am here trying to appreciate all of and talk. I am trying to see you all personally. Is 80% are in India. It is a zoonotic disease, and it is due to the bite of the mostly the rats
dog first is, that's why it is known as rabies, and other aquatic animals are also causing rabies, but their incidence is quite less. Because in humans, the dog bites are maximum all over the world. It is due to the bite of rabies virus, which is introduced by cutting of the skin, goes through the nerves and blood to the brain, involves the brain, and once a hydrophobia is developed, as you all know, hydrophobia means unable to take the water, and in the final stage, they are not capable to see even the water. If we show them water, tigers will develop. They will develop spasticity all over the body. And regarding the microbiology of this virus, that is the main different G protein, N protein, P proteins, M proteins. But this vaccine has been developed by the G proteins. That is the main protein in rabies virus. Hence, after detecting and produced by this G protein antigen, antibodies are developed. And that's why the doses are reduced in rabies in this Kerala vaccine, that is the rabies. And it is the 3 doses, 0, 3, and 7. Globally, what I said, there were about 50,000 cases globally, and out of that, 20% are in India. And as world reports, that is 9 mortality more in the rural areas, because their cases are much more in rural areas. It is a 100% fatal disease. The different vaccines were previously available that were non-sterile rice preparations were about 34 years back. Then comes the minimal neural content liquid preparations were there. And now presently, the latest is this. Hello? This is this Kerala vaccine, and it has got only 3 doses that are 0, 3, and 7. The main reason of introducing this vaccine is due to the minimal frequencies. Previously was 5 doses, total doses were 7 doses, and now it is only 3 doses, 0, 3, and 7. It is said to be a good vaccine presently in recent scenario. It is also given same as previously rabies vaccines were given, that is intramuscular injections. Different positions in manufacturing this VLP technology. VLP means virus-like particles are proteins complexes exist in nanoproteins. This is the manufacturing part of this vaccine. Originally, research article in Novel recommend rabies G protein vaccines, the rabies virus-like particles based rabies vaccines. It is the clinical phase, first, second, and third has already been completed, and in the 4th phases, it is used by many physicians, surgeons, and other vaccination centers in the India and abroad. And finally, the time will tell how the response in the cases of positive cases of rabies, which are too less nowadays presently. It is a recombinant nanoparticle rabies G protein vaccines administered intramuscularly as previous vaccines were given. 0, 3, and 7. And if a case is confirmed case, where are much more doubt of rabies, then we have to give 2 booster doses also. And again, 0, 3, 7, 14, and 28. That's the complete vaccinations in 5 doses. The primary object is
In spite of it, 14 days post first dose, seroprotein RNA and secondary objective is seroprotein day 42 post first dose of test vaccine. The experience will tell in futures because this vaccine has been introduced recently. It is said to be much more safer than previous available vaccines. The conclusion of this study was not inferior to reference vaccines, previous vaccines, it is better than that, less adverse effect compared to reference previous vaccines, and the novel 3-dose rabies vaccine, the vaccine is 037, and in suspected cases of rabies, we give 14 and 28 days, that is the final doses. And this is the rest innovation in this year. Award has been given to this vaccine. Thanking you. I welcome any query, any questions. वो एक्चुअली ऑडियंस नजर नहीं आती ना जब तक। इसमें सर एक्चुअली क्या हुआ है, जैसे आपने जो लिंक बनाया था ना, इसमें अपन है और जो ऑडियंस अटेंडेंस है ना, वो ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू ज्वाइन किया है। अच्छा, तो वो क्या जैसे चैट बॉक्स पे डालेंगे ना, तो ये एसेंशियल जो ज्वाइन करे ना, वो दूसरे लिंक से उससे पूछेंगे। जी जी, तो अपन को ऐसे भी क्या क्वेरी है, विदाउट क्वेश्चंस देयर इज there should be much interest of the audience. Yes, sir. हाँ, जोर से बोला आवाज हमारी। Thank you so much, sir. Yes. Thank you so much, sir, Dr. R.P. Sharma, sir, for the information told. We truly appreciate with your efforts. Last but not the least of word, would you like to inform that Rabies has won 2 prestigious awards in innovation category, ET India Pharma Award and Golden Globe Tiger Award. Thank you so much, sir, for your support. सर जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, सर बालमू सर क्यूरी है तो सर आप शेयर करेंगे एक बार। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर थैंक यू सो मच सर। और अभी सर एक क्वेश्चन आया है डॉक्टर, इसमें आया सर, इज दिस क्लिनिकली प्रूवन, कोई ट्रायल है इस वैक्सीन का, ऐसे करके आया था। If it is clinically proved case of rabies, 100% what is there, you can try to save the life, try up to ventilator level, and then see that is your luck and the luck of the patients, they survives or not. But it is 100% fatal disease till now. And in such cases, we have to give serum also. But this vaccine starts immunity after 7 days. So in cases of food positive case where the hydrophobia has been likely to be developed, then serum has to be given immediately locally at the site of the bite. Yes, any other question? Yes. एक क्वेश्चन और आया है सर इसका कि इज दिस सेफ फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट। सर पीडियाट्रिक पेशेंट, यस सर। Regarding the pediatric patients, according to my knowledge, the vaccine dose is same. Otherwise, like as we are giving drugs according to the weight of the body. In case of child, we are giving according to weight. But in case of rabies, we want to avoid all the risk and save the life. The doses are same in all the cases. It's my experience. Very true. Very true, सर। आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल सही है, क्योंकि जो रेबीज है वो 100% फेटल है सर। अभी इसलिए हम वैक्सीन की डोज को बच्चों में पीडियाट्रिक डोज नहीं बना सकते। वी हैव टू गिव द सेम वैक्सीन बिकॉज इसकी वजह से कोई ना तो उनके आफ्टर इफेक्ट्स होने हैं, ना इनके कोई साइड इफेक्ट्स होने हैं। वी हैव टू गिव द इक्वल डोज इन पीडियाट्रिक केसेस आल्सो। यस सर। थैंक यू सो मच सर। और एज ए कंपनी हम ये नहीं बोल सकते कि दिस इज सेफ और नॉट। ये सर आपका एक्सपीरियंस है जो आप शेयर कर सकते हैं। बाकी ट्रायल्स अभी
ट्रायल्स हैं सर, जारी हैं इसकी आपकी पीडियाट्रिक की, और जल्दी शायद ट्रायल्स का अपने पास मतलब डाटा बेस भी होगा अपने पास पीडियाट्रिक के लिए। It is too difficult to get the data in pediatric cases because in pediatric cases in drugs what we do is that we reduce the quantity of the drug according to the weight, pediatric dose, subpediatric dose, neonatal dose. But in cases of vaccine, like in case of the Tetvac, we are giving the same 0.5 ml of Tetvac injections to the kid, pediatrics and neonatal. We will not reduce the dose of the vaccine in pediatric cases. Particularly in rabies, it is my experience. Of course, total literature is, I think, not available everywhere, but trials will tell according to neonatal and pediatric doses. Yes. थैंक यू सो मच सर। सर और कोई क्वेश्चन अभी किसी की साइड से? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? सर शायद अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। और मुझे पता लगा कि सर कहीं इमरजेंसी में कोई काम आ गया था, फिर भी आपने आके सर क्या करें, प्रोफेशनल। नहीं सर, वो हम जानते हैं, बाकी आप कैसी भी स्ट्रेस हो हंस के उसको मतलब कैसे निकाल देते हैं। मैं काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ सर आपसे। We have to adjust over time everywhere. Because we cannot say anything in the next 1 hour. Who are waiting हम भी in front of आपसे ही us. सीख रहे हैं सर। Thank you. चलो, थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू ऑल द डेलीगेट्स। और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही जुड़ते रहें और कुछ नया इनोवेटिव प्रोडक्ट कुछ ऐसा बताते रहें, और सर जो आते रहें और हमें मतलब कुछ नया अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच सर। Thank you. एक्टिव पार्टिसिपेशन सर एक्चुअली इसमें क्या मजा नहीं आता, वो अब मैं समझ गया कि वो हैंडल कर रहे हैं, एक्चुअली वो हैंडल कर रहे हैं, लेकिन आजकल तो रिसेंट इतना हो गया कि ये ऐसे नहीं होता सर। हाँ, लेकिन लास्ट टाइम जैसे होती थी ना यूट्यूब पे, जूम पे सारे खुद ही बोल देते, लेकिन इस बार कंपनी ने क्या एक चेंज किया, ये ऑल इंडिया लेवल पे की ना, तो यूट्यूब से कनेक्ट करवाया इनको, तो जो पार्टिसिपेंट है सारे यूट्यूब पे थ्रू जुड़े हुए हैं, आप लाइव देख रहे हैं। मजा नहीं आता ना, आपको शकल नहीं दिखता, कौन सा गायक किस उम्र का, तो पता लगता है सही कि जो बोल रहा है उसकी उम्र 25 साल तक है। तो भैया हम सीधा सवाल कर लेते हैं, कितने केसेस आपने रेबीज के देखे? हैव यू सीन एनी फैटेलिटी इन रेबीज? हैव यू सीन एनी केस ऑफ हाइड्रोफोबिया? नेवर सीन, देखा ही नहीं लोगों ने, देखे नहीं। सही, तो अब तो केसेस ही कम हो गए ना, अब तो सर बहुत रेयर केस हो गए, बहुत कम हो गए। वो एक्चुअली कंपनी लाइव के थ्रू किया ना, तो ये डेलीगेट्स को वहां पे ज्वाइन करवाया और अपन को यहाँ पे, तो दो खोल दो गया, आपका काम हो गया। चलो ठीक है भैया, बढ़िया, चलो ठीक है। नेक्स्ट बुला लो, क्या पेशेंट है उसको बुला लो। देखो ऑपरेशन वाला आया हुआ है क्या? हाँ, फटाफट ले लो, थिएटर में सामान मंगा लो, उससे चार्ज जमा करके थिएटर ले लो।